जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ऑनलाइन पीपल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। क्या करें आज? शुड वी मूव ऑन और टेक सम क्वेश्चंस? जी, किसी को कोई सवाल? एनीबॉडी? जनरली फतवे नहीं पूछें, फतवों के लिए इधर रुजू करें। कोई और सवाल? क्यों भाइयों? I've said to AS9 that they will not graduate until that their wives are happy with them. So in other words, they will never be graduate, right? क्यों भाई साथ? साथ कह रहा है. Inshallah, for next 1 month, he is like taking his wife out every week for food. कोई और बात? जी सर. Hmm. I did not say that you have to give more time to them. You do give time. Basically, there has to be a balance. I never said to give them more time. I was talking to those who do not give time at all. जो देते ही नहीं है वक्त, वो गलत है. देना चाहिए, लेकिन it has to be within a limit. Of course, I have to do 10 things, right? So one of those things is giving her time. But this has to be like, वो तो आपको कहीं ना कहीं जाके you have to draw a line. But then if she is not happy at that, फिर उसकी मर्जी उनकी मर्जी. ऐसा तो नहीं हो सकता you give them all the time. You give them 1 hour and then they demand 2 and you give them 2 and they demand 3 and you give them 3. It cannot happen. Have to. My wife knows, okay, this time to this time is her time. Right? I'll have tea with her and all of that. Like other than that, I'm going, I'm in my study room, see you later, inshallah. Sort of बताना. वो तो बताना पड़ेगा, okay? And the, you're setting expectations, right? So you will set expectations. If she is demanding, like you've been giving her 1 hour and she demands 2, hey, I have some, I have to study for my exams or whatever, right? Then she will know, okay, he's only giving me 1 hour. वो expectation थोड़ा सा, fine tuning, and then it'll get fixed, inshallah. फिर उस पर खुश हो जाएंगे. It'll be okay. यही हो सकता है, वरना तो. और कोई बात भाइयों? एनीथिंग एल्स? नई शादीशुदा जोड़े, क्या हाल है आप लोगों का? उमर, आर यू न्यूली मैरिड और नॉट? 3 years? हाँ. Somebody asked somebody, it is, some have narrated it by a Sahabi, but I won't quote it because it's not 100%, it's not like a surety that if that Sahabi said it or not. But somebody asked him, what is marriage? He said, Sururu Shahrin. It's happiness for 1 month. He said, what after that? He said, क्या है? Huh? غموم دهر. He said, then it's come for the rest of the life. He said, what's next? He said, Kusuru Zahrin. It'll break the back. I said, what's next? He said, Dukhulu Qabrin. Until that you entered your grave. It's okay, man. Responsibility, right? Every responsibility breaks your back. And it is a responsibility.
No doubt about that. So 1 month is honeymoon period. After that, of course, it's tough. Like, and as long as we realize this is what the whole point was, that we needed to understand that marriage is a responsibility. Problem is that we are not taking it as a responsibility. एक जिम्मेदारी का नाम है शादी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. Those who think about the second and the third and the fourth, I mean, I'm not against that, लेकिन but the thing is, okay, do we understand the responsibility? This is the key. कि हमने उसकी जिम्मेदारी को पहचाना है कि नहीं पहचाना. दूसरी शादी, तीसरी शादी, लोग बातें तो बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन क्या जिम्मेदारी पहचान ली हमने? जो जिम्मेदारी पहचान लेता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है. भाई साहब, जाग जाए, जाग जाए. आप, मुझे भी नींद आ जाएगी यार. ख्वाबों में दूसरी कि तीसरी ख्वाब देखते रहते हैं ना बेचारे हम लोग. हम तो नहीं, सॉरी, मैं नहीं भाई. ऑनलाइन जा रहा है, फंस जाऊंगा. लेकिन जिम्मेदारी है, बहुत ज़बरदस्त जिम्मेदारी है, बहुत ज़बरदस्त जिम्मेदारी है. प्लीज़ इस जिम्मेदारी का एहसास करें. बस ये मैं चाह रहा था. इस पूरी पिछले 2-3 हफ्तों की वर्कशॉप का मकसद ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहाइंड मैरिज. इट्स नॉट अ जोक, एंड वी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द डे ऑफ जजमेंट. कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही. ऑल ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू विल बी आस्क्ड अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम में से हर कोई जिम्मेदार है. तुम में से हर एक से इसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, और ये जिम्मेदारी है. बस ये चीज़ याद रखें. बहुत होंगी बीवी की बातें यार, और कोई बातें पूछो. कुंडी, कोई और बात पूछो यार. क्यों साथ, बीवी के अलावा हट के कोई और बात. हाँ, ये बड़ा, deep discussion, of course, how to train your children. And the thing is that if, it's like all if statements, if one has done the right things until that they become baligh, अगर आपने सही तरबियत की है बुलूगत तक, and after that they become baligh, like they become mature, 14, 15, 16, and now still those things that we have been telling them did not enter their heart and mind, heart and soul. So here, all what we can do is make dua for them, plus keep on just reminding them. बस उसके बाद इंसान ज़बरदस्ती नहीं कर सकता. You cannot force them to anything after that, because it can have a negative effect actually. And there are many parents who do not give their children phones, mobile phones, which is a good thing, I think. Lekin there will come a time when you will have to give it to them because of the peer pressure that they have. Lekin by that time, as I said, I gave my phone to my son at the age of 16. And initially I put parental control on it. And I told him, I put parental control. So I only allowed like apps 1, 2, 3, right? Including was WhatsApp, because I could communicate with him because he had gone out to Pakistan, वगैरह वगैरह. लेकिन then, parental control is also until, there will come a time where you will have to absorb and digest and understand that he is now a mature person, right? 17, 18. Boy, he's not a boy anymore. He's a man. She's not a girl anymore. She's a girl, but she is like a mature girl, right? He's a mature boy. And that's it now.
मैंने तो यही कहा था the day that I opened everything up and said, beta, we did what we were supposed to be doing, right? We did it according to the best of our knowledge, understanding. अब ये आप और अल्लाह का मामला है. It's between you and Allah now, right? And that's what we said, and that's what then we just gave it to him. So in short, yani there'll come a time when then you'll have to just let it go और फिर अल्लाह के हवाले कर दें उनको. लेकिन उससे पहले वो जो इनिशियल टाइम, that has to be a real good training ground. वो एक अच्छा मजबूत प्रिंसिपल्स बेस्ड विजडम के साथ, हिकमत के साथ, वो जो तरबियत का टाइम है ना, पहले 13 साल, वो बहुत अहम है. उसको कैसे मैनेज करते हैं, वहाँ हम वीक पड़ जाते हैं. दैट्स वेयर वी एक्चुअली fall weak and we do not train them properly. And then parents come to me later, oh, my what do I do with my son, with my daughter, he or she is doing that. I said, how old are they? They're 15, they're 16. मैंने कहा अब क्या फायदा, अब तो मतलब पानी सर से गुजर चुका है ना. We have to make dua for them now. We'll never leave making dua for them. And with a lot of hope, inshallah. कि अल्लाह के हाथ में सबके दिल हैं. अल्लाह किसी के दिल को कभी भी फेर सकते हैं. And secondly, of course, we will not stop advising them. But then you'll have to be very careful about advising them as well. हर वक्त वो जो होता है ना bombardment, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं. पहले भी नहीं करना चाहिए था. लेकिन अब तो और भी आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ना कि आप you pick and choose, you have to sometimes ignore a lot of things that they are doing. But at the right time, tell them the right things. As you deal with any adult, actually. अब मैं आपको सबको तो हर वक्त ये नहीं कह सकता ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे बैठे, ये क्या किया हुआ. पहले कहता था, अब नहीं कहता. कुछ लोग मेरे से शिकायत भी करते हैं कि अब आप नहीं कहते, अब आप बहुत कम कहते हैं. मैंने कहा, चोटें इतनी खा ली हैं कि अब जो है हम दिल ही नहीं चाहता कहने को. लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं दाढ़ी मूछों वाला इंसान हूँ, आप क्या समझते हैं मुझे. तो फिर मैं गलतियों से सीखता है ना इंसान, जिंदगी बहुत सीखा. और कोई बात भाई, एनीथिंग एल्स? अच्छी बातें करें अम्माद यार, कोई अच्छी बात. अब्दुल्ला तैमूर, कभी कभी देखते हैं आपको, कोई अच्छी बात करें, दिल को खुश करने वाली बात करें. हाँ, अभी नहीं यार, अभी का ये अच्छी बात की है, अच्छी बात करी, दिल खुश करने वाली, आप ये कह रहे हैं. अभी तो 3 महीने पड़े हैं यार, 4 महीने, 4 months ऑलमोस्ट. 4 महीने में तो दुनिया ऊपर से नीचे हो जाती है. नहीं नहीं, if it's a constructive activity, we must do it. Hobbies, if they're constructive activities, you must do it, definitely. If the niyat is right, yes. वैसे मुबाह है, लेकिन if the niyat is right, then it will become an ibadat. If my niyat behind playing is that it's a physical activity, I'm taking care of myself. Of course, taking care of yourself, وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Your body has a right over you, so it will become an ibadat from that perspective. Or there can be many niyats. I'm just stopping myself from any wrong. Otherwise, if I'll sit and just browse and maybe something I may end up watching something wrong. So rather than that, let me go and play football. तो नीयत पे डिपेंड करता है, लेकिन एब्सोल्युटली वी नीड दैट. आई थिंक वी शुड हैव सम टाइम फॉर आवरसेल्व्स, डेफिनेटली करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. Sahaba used to do that. Sahaba used to have, they also used to watch
You know, the people used to come and have like games of swords and stuff like that. They used to race. They used to have horse races, camel races. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to have camel race. His camel always used to win always. Once his camel lost the race. एक दफा उनकी ऊंटनी जो थी वो हार गई. Sahaba were sad. How come Prophet Sallallahu camel lost the race? And Prophet Sallallahu said, whatever goes up comes down. जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है. तो जिंदगी का हिस्सा है. तो यानी they were doing all of that. हर वक्त तस्वीर पकड़े थोड़ी बैठे होते वो लोग. Exactly. Yeah, yeah, yeah. Exactly. Very, very, very important that we engage our children into sports activities, physical activities. बहुत ज़रूरी है. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा. More than that what we can think of. Definitely. और कोई बात है मेरे भाई? उमर, कुछ अच्छी बात करो यार. जी भाई. So basically the question is that, I did not used to practice as such, as right now I'm saying it. Right? There came a time when Allah Ta'ala gave tawfiq and, my life changed. Right now I'm revealing something of my own. Like, is it something that was a secret? People who know me from like last 40 years, they know me, right? It's not something that was secret. They knew it and they knew that might change at a certain point in my life. But that thing that was public already, then, to mention that, Junaid Jamshed Rahimullah I used to sing, I used to dance, I used to be with the girls and stuff like that. Everybody knew it. To tell people that, तो उसमें तो कोई issue नहीं है, लेकिन there is something that was between me and Allah. Nobody knew that. That is something that should not be revealed at all. Illa ke you have to seek mashwara from somebody. If somebody is into watching pornography, right, and he's not able to get out of it, he goes to somebody and says, you know what, please help me. But that is again, that's an amana between that person and that person, right? Neither this nor this should reveal it to anybody else. That is an exception, just like there are exceptions of backbiting, right? We cannot backbite anybody with except, you know, सिचुएशन ए बी सी फतवा लेने के लिए मशवरा मांगने के लिए वगैरह वगैरह तो likewise this is an exception if you have to seek help from somebody people go to psychologist and they reveal themselves of their own वो तो ये help है treatment है example can be we cannot show our satar to anybody लेकिन if say for example anybody is hemorrhoids right and he has to get his surgery done of course he will expose himself to the doctor बिल्कुल यही मिसाल है पैसे इजाज़त नहीं है लेकिन इलाज के लिए तो अगर कोई अल्लाह और बंदे के दरमियान मामला था तो अल्लाह के बंदे के दरमियान ही रहना चाहिए अल्लाह ये कि आप किसी से मदद तलब करना चाहें लेकिन समथिंग वाज पब्लिक पीपल न्यू इट फिर उसको रेफर करना हो आई वाज लाइक दिस एज वेल आई यूज्ड टू लिसन टू द म्यूजिक एज वेल this is how I changed myself I could did not used to pray but then suddenly
दिस हैपेंड एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, जो लोगों को ऑलरेडी कोई सीक्रेट नहीं था, वो पब्लिक थी, ऑलरेडी पब्लिक चीज़ थी। आपको नहीं पता, लेकिन मैं तो नीयत क्या है, तरगीब देना है कि यार मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, इफ़ आई कुड डू इट व्हाई कैंट यू डू इट। जी भाई। मुफ्ती निहाल साहब ये सवाल करें, उर्द तो गुरूल देख सकते हैं कि नहीं? पहले फतवा तो ले लूँ ना, पहले एक मिनट। मेरे इर्द गिर्द मुफ्ती हजरात बैठे हुए हैं, मैं गोली तो नहीं खानी ना, फिर मैं बात। जी मौलाना, फतवा दीजिए। सुना है बड़ी हसीन और जमील ख़वातीन भी होती हैं उसके अंदर। मैं उन बहुत कम लोगों में से हूँ, मेरा एक भाई यहाँ भी बैठा हुआ है जिसने एक भी एपिसोड उर्तुगरुल का नहीं देखा। आई नॉट सीन इवन अ सिंगल एपिसोड ऑफ उर्तुगरुल। क्यों फैजान, आप भी ग्रुप में हैं, हमारे जमात में शामिल है? जी। हाँ, नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ फतवा पहुँच। नहीं चले, छोड़ें तजी औकात को, छोड़ दें, फतवा देना देखना जायज़ है कि नहीं? दे 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 दे। वो कह रहे मैं दे तो दी है कि मैंने देखा है। क्यों मौलाना, आप भी दे दें फतवा। चले, फतवे तो दो आ गए यहाँ पे। देखें, बड़ी सेंसिटिव सा मामला है आपका सवाल जो है ना, इट्स अ वेरी, इट्स अ टू, मेरा मेरा साथी तौर पे समझता हूँ कि ये एक डबल एजेड सोर्ड है, कि फ़ायदा भी देगी और नुकसान भी देगी। राइट। को मारेगी तो मुझे भी मार सकती है, मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है। कि एक लिहाज से देखें तो आप, you're weaning off somebody from something really bad, right? कि आप यार ये इतनी बुरी चीज़ है, तो उससे चलो कम बुरी चीज़ देख लो, ताकि उससे तो निकलो। अगर तो ये नीयत है, अगर वाकई एक बच्चा, कोई बंदा बड़ा भी किसी ऐसी चीज़ में पड़ा हुआ है जो वाकई गलत है, मतलब अब डिज्नी देख रहा है, क्या वाहियात चीज़ है डिज्नी यार, खुदा के वास्ते, बट इफ यू आर पुटिंग योर किड्स टू डिज्नी, look at my hands, please, for God's sake, take them off Disney, please. In any way, these days, Disney is one of those who's openly declaring that they are supporting Israel, right? So we should definitely boycott Disney. One, two, their open agenda is LGBTQ. They're not hiding it. They're saying there has to be one transgender or homosexual character in their cartoon. They're saying they have to have one. हर उसके अंदर एक ना एक होमोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर कैरेक्टर होता है। उनका एजेंडा है ये। वो ओपनली डिक्लेयर करते हैं, आप देख लीजिए उनकी, आप कोई गूगल करें, यूट्यूब पे जाएं और वो आपको बताएंगे। प्लीज, डिज्नी इज अ बिग नो। डिज्नी तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नो। तो इस तरह की अगर बेकार किस्म की चीज़ है, उसे वीन ऑफ करना है, बच्चा या बड़ा या जो भी उसके अंदर इतना एडिक्ट हो चुका है, तो आई थिंक वीनिंग ऑफ स्टेज में तो ठीक, यस, टेक हिम टू अ लेसर। लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट आइडियल। हमें जहन में कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रखनी पड़ेगी कि ये भी चीज़ ठीक तो नहीं है। मैंने जैसे कहा, वाकई में ये बातें सुनी है कि वहाँ ऐसी लड़कियां हैं उसके अंदर नहायत ही हसीन और जमीन है, अब वो कोई देख रहा है एक नौजवान बच्चा, तो उसको अच्छी नहीं लगेगी लड़की क्या? राइट, खूबसूरत चीज़ सारे को खूबसूरत लगती है ना। तो फिर क्या फिर वहाँ पे किसी और फैंटेसी में पड़ जाएगा, फिर कुछ और। हम सब इस स्टेज से गुजर के आए हैं यार, हमने घाट के पानी पिए हैं कि नहीं पिए सारे?
क्यों भाई? तो एक बच्चा हो, नौजवान, 16-17 साल का, और उसको एक खूबसूरत लड़की सामने आए, तो फिर वो जाहिर बात है किसी फैंटेसी वर्ल्ड में तो जाएगा ना। तो ये तो नेचर है, इंसान की फितरी चीज़ है। ऑफ कोर्स इफ यू डू इन, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग दैट इनटू इंग्लिश, that if you people do see like young boys see young good looking girls, then of course they will start fantasizing about them. So that's not ideal. तो गोल यही होना चाहिए यार, इस सबसे निकलना है। लेकिन यही फतवा दे रहे हैं उलमा भी, और तरीकाकार भी बता रहे हैं कि if somebody is into music, let's come to nasheed with music to start with, कि जी कोई अच्छे वर्ड्स, कोई मंजिल तलाश कर, कोई पीछे म्यूजिक भी है, चलो यार ठीक है। उसके बाद सेकंड के उस पर दफ पे आ जाओ, दफ पे ले आओ, ठीक है। तो फिर दफ की भी फिर कोई गुंजाइश निकलती है एटलीस्ट कुछ ना कुछ, शरीयत हदीस की रोशनी में। चलो वहां पे अगर रुक जाता है तो ठीक है, क्यों होना ना, रोक दो यहाँ पे दफ पे, सुनने दो। लेकिन अगर फोकल्स पे आ जाए तो मतलब आहिस्ता 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 उस बंदे के अपने तकवे के ऊपर होता है, लेकिन शरीयत की हदूद के अंदर लाना तो ज़रूरी है। तो लेकिन टू स्टार्ट विद, यस एब्सोल्युटली फाइन, टू स्टार्ट विद, आई थिंक इट इज़ बेटर टू टेक देम ऑफ फ्रॉम समथिंग रियली बैड into those things that are, at least the message is okay, at least the message is right, even though there are some things that should have been ignored, and then कंटिन्यू टू बी इन द मॉफ, और समझाते रहे, फिर उसके ऊपर अल्लाह से दुआ मांगे। लेकिन कम अज़ कम ये बड़ा मुश्किल है। देखिए शरीयत शरीयत का मिजाज भी यही है, शरीयत का मिजाज यही है। शराब जैसे हराम हुई आपने पढ़ा हुआ है, राइट? वी हैव ऑल स्टडीड हाउ अल्लाह ताला में प्रोहिबिटेड अल्कोहल। इट वाज नॉट दैट जस्ट गेट रिड ऑफ इट, वी ऑल नो दैट इट वेंट डाउन इन 3 स्टेजेस, राइट? 3 स्टेजेस के अंदर अल्लाह ताला ने उसको हराम किया है। आहिस्ता जी शराब पियो, नमाज नहीं पढ़नी, जब तक शरा नशा हो उस वक्त तक नहीं नमाज पढ़नी। तो आहिस्ता 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 अल्लाह ताला ने किया, बिल्कुल इस यही तरीका। क्यों अल्लाह ताला ने किया? व्हाई वर दीज आयात केप्ट इन द कुरान? क्वेश्चन, व्हाई वाज द तिलावत नॉट गॉट मनसूख? तिलावत भी तो मनसूख हो सकती थी ना इनकी, कई आयात की तिलावत मनसूख हुई है, अल्लाह ताला ने इन आयात की तिलावत को मनसूख क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि अल्लाह ताला वांटेड अस टू कंटिन्यू टू नो कि दिस द प्रोसेस, तो ये प्रोसेस तो रहेगा हर चीज के अंदर। तो इसमें भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन दैट वी हैव टू वीन पीपल ऑफ इन स्टेजेस। वी कैन नॉट जस्ट आस्क देम टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस 100% कि ओ कल से सब कुछ छोड़ दो। तो उस दर्जे में तो ठीक है, एज लॉन्ग एज वी डू टेल देम द प्रिंसिपल्स। यार ये भी इट्स नॉट आइडियल एज वेल, इवन उर्तुगरुल इज नॉट आइडियल एज वेल, वी हैव टू कम ऑफ दैट एज वेल। तो ये है, उस इस नीयत के साथ तो बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन करना चाहिए बच्चों को। हाँ नहीं सही है, ठीक है। हाँ नहीं, कुछ नहीं वाला जमाना तो गया ना, कुछ नहीं देख सकते। तो हम भी देख रहे हैं यार, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, कुछ तो हम भी देख रहे हैं ना। तो कुछ हम भी देख रहे हैं, तो फिर हम कैसे बच्चों को कह सकते हैं आप कुछ भी नहीं देख सकते? यू आर राइट, लेकिन हैविंग सेड दैट, आई मीन वी आल्सो नीड टू टेक टाइम आउट फॉर किड्स एज वेल। बिल्कुल यार, कितना पैसा कमा लेंगे? हाँ, वो भी याद रखना चाहिए ना हमें। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ ऑन अ साइड नोट कि वी आल्सो हैव टू थिंक वी हैव टू गिव किड्स टाइम एज वेल। हमें अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ तो देखना पड़ेगा उनको, और वो क्या देखना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, इट्स अ बिग फील्ड, इज्जतुल्लाह, to prepare some Sharia compliant stuff, entertainment stuff for kids. It's an open field. If anybody has, can invest in that. एक बहुत बड़ी है फैजान भाई। हाँ
ऐसा नहीं हो सकता. We are living in this dunya. This is, you are right. Any health is, yeah, they're two different things. Not apple to apple comparison. नहीं, उस पे तो हम बात कर चुके. We all agreed to that, right? We all agreed to that, that there has to be physical activity. देखिए, सॉरी, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं. इन शॉर्ट, what are you saying? मतलब, ठीक है, ठीक है, ठीक. I agree to what you are saying. Agree to. लेकिन when you talk to 100 people, this is not something that 100 people will do, right? One, two, very, जिसको उलुल आजम लोग कहते हैं ना, वो तो ये करेंगे. फैजान बानी तो कर लेगा. डिस्कशन तो, और उस वक्त तक क्या करें? बच्चे गलत है क्या? नहीं, ये तो डिस्कशन आई नहीं. वी नेवर स्पोक अबाउट just giving it to them versus sitting with them. That's a separate discussion, which I agree. But still, you're watching, right? Still, you're watching. The thing is, what content are we watching? This is our discussion. What I'm saying is, huh? This is exactly what I said. कि we as Muslims should be developing meaningful content. यही मेरी बात थी. ये जो मैंने अभी बात की ना, जो प्रोजेक्ट की, this is exactly what I said. We do not have enough meaningful content on social media right now. For that, this is something that we must develop. ये मैं बात कर रहा हूँ. आपने भी इसी बात पे कह रहे हैं कि मीनिंगफुल कंटेंट देखना, मतलब उनके साथ बैठ के देखें. लेकिन वेयर इज द मीनिंगफुल कंटेंट? वो कहाँ है? कौन सा है? अगर है भी, 1%, 2% मे बी, तो बाकी इसके बाद इसका मतलब तो हुआ कि हम लोग लिमिट हो गए 1-2% पे. मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि मीनिंगफुल कंटेंट को क्रिएट करना चाहिए, ताकि बच्चों को बिल्कुल 100% शरिया कंप्लाइंट पे लेके आए. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को. मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ. लेकिन आप भी इसी बात पे आ रहे हैं कि बच्चों को दिखाना तो पड़ेगा. आपको ये तो नहीं कर सकते कुछ भी ना देखें. फिजिकल एक्टिविटी पे भी हम बात कर चुके. फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट. लेकिन हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ नॉट वॉचिंग एनीथिंग इन द डे एंड एज दैट वी आर लिविंग इन? जीरो जीरो इमेज.
वो भी ठीक है, वो भी एग्रीड. बिल्कुल यही बात कर रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. वो जो आप बात कर रहे थे ना कि यू डू नॉट एग्री, मुझे समझ नहीं है किस बात पे डू नॉट एग्री. लेकिन यू एग्री कि कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना. रियली. ऑफ मीनिंगफुल कंटेंट. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. आप किस पे? Do you think it's comparable? Do you think it's comparable to Disney? I've seen kids. Sorry, बात लंबी हो गई, but I've seen kids who have watched Disney and who have watched things like these. They absolutely reject that. They're bored. हाँ, यही तो कह रहा हूँ. How this is what I'm saying, that why we should, ये मैं कह रहा हूँ ऐसा content which has a similar attraction. किसके पीछे? नहीं नहीं, वो ठीक है, ठीक है. सही है, you're talking about ideal scenario actually. हाँ. नहीं नहीं, वो तो of course. What did I say? I said wean off slowly, gradually, because this is how natural way of weaning off is as well. This is what I said. You cannot just, ये गैर फितरी है. From here to here, and 99% of people are here, right? So what you are saying is that if you're starting from here, then let them not get addicted to it. I'm talking about those who are already addicted. How to wean them off. हम शायद दो डिफरेंट लोगों की बात कर रहे हैं. You are talking about how to train them. I'm talking about those who are already addicted, how to wean them off. For them, weaning them off, you need to have something here that is Sharia compliant, sort of, where I don't think that there is any content which we need to, because 99% people are like that. 1% is like that. You are talking 1%, I'm talking 99%. दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं हम लोग शायद, इसीलिए शायद we are not. लेकिन of course, this is ideally you should not be watching all of this. Should ideally should be reading books. Ideally should be, so this is ideal scenario, and possibly you can train your kid on that. लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि बच्चे, अब्दुल्ला का ये सवाल था कि जो ऑलरेडी इधर हैं अब उनको क्या करें.
अब उनको आहिस्ता आहिस्ता वीन ऑफ करना पड़ेगा, और उस वीनिंग ऑफ के लिए हमें ऐसी शरिया कंप्लाइंट चीज़ बीच में कहीं लानी पड़ेगी बिफोर दैट. एंड आई केप्ट ऑन सेइंग दैट वी नीड टू कीप टेलिंग व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, सो दैट इवेंचुअली दे कम अप, तौफीक अल्लाह की उनको मिल जाएगी, वो बिल्कुल उससे दे गेट ऑफ इट. नहीं नहीं नहीं, मैं तो कह नहीं रहा वी शुड थिंक बैड अबाउट, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन दिस. Because I personally believe that that content is not attractive enough. That's what I'm saying. हाँ, ये मेरा ख्याल है क्योंकि किसी I know. लेकिन there are people who understand this. आप क्योंकि because you have told them this, they understand there is what's wrong in that Barbie and what's wrong in that, right? Many people they know that music is haram, but they're so addicted to music. There's so many people who come to me, give me an alternative. What should I do now? I want to listen to something. He knows that's wrong. He does not want to listen to it, but he wants an alternative. कि अब मैं क्या सुनूं? चलें, we'll continue, inshallah. But that's a good discussion, actually. It's a good discussion, mashallah. I think it's very constructive as well. Huh? फैजान कह रहा है बिल्कुल नहीं देख सकते. नहीं नहीं, I personally feel I think this is the way to give them alternative. और ये मेरा ख्याल है one of the ways is this what you are saying कि एक बेहतर है, relative बेहतर है, मैं कह रहा हूँ relatively speaking, क्योंकि that's a TV, right? हम कहते हैं हमारे घर में टीवी नहीं है, हमारे घर में 10 टीवी हैं भाई, है ना? और कोई कंट्रोल नहीं है. हर बंदे के पास एक टीवी है. जब कहते हैं वो बड़ा हमारे घर में टीवी नहीं है, भाई आप ये क्या है, ये तो टीवी, इतना बड़ा टीवी है मेरे पास. तो लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, relatively स्पीकिंग. आइडियल नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ आइडियल नहीं है. मैं आइडियल बिल्कुल बहुत बेहतर है. यस, आई थिंक सो. मेरा ख्याल है सब बैठ के देखें, पेरेंट्स भी बैठे. हाँ, बहुत बेनिफिट्स हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. बहुत कंट्रोल है, लॉट ऑफ कंट्रोल है. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. बट दिस इज अगेन नॉट आइडियल. हम भी बचपन में बड़े हुए हैं, हम भी सब. एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. हाउ टू वीन देम ऑफ, कंटिन्यू टू टेल देम द रॉन्ग थिंग्स, उनको बताते रहे गलत चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. वी हैव टू ब्रिंग देम. ऑल तो आइडियल नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है. You know what he's saying. I have a practical, any sort of demonstration in my house as well. My son loved books. He never saw anything whatsoever. कुछ भी नहीं देखा उसने. Right? सिर्फ long flight. एक दफ़ा हम लोग, we are coming from the US to Dubai or something. My wife, my son was very young. और उन्होंने वो जो एमिरेट्स की कार्टून थे ना, वो कार्टून
ने गेम लगा दी। गेम में वो एक फ्रॉग था, द फ्रॉग एक्चुअली हैड वो कैचिंग फ्लाइज। So when the frog caught a fly, my son started crying. I was like, how come this frog harmed a fly? क्योंकि he had never seen it before. उसने कभी देखा ही नहीं था कि कोई किसी को, टॉम एंड जेरी वो जो बच्चे डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, इतने डिसेंसिटाइज किड्स, राइट? So he was so sensitive to the fact that how can it happen? And he did not watch anything until I think, except us like 2 minute, arrogance not 2 minute BBC cartoon, or two literally वो sketch cartoon था 2 मिनट का, उसमें वो जिराफ जो था, he would say a very proud thing and then he got knot in his neck. So it was the arrogant knot. तो इस तरह की मेरी वाइफ ने बैठ के उनको थोड़े 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 शायद कभी, otherwise he never saw anything in all his life. I have an example in my house. मैं तो बात कर रहा हूँ, I'm talking about what 99% of the people are. You have to give them solution. अब उन्हें कहें बच्चों को सब खत्म करके ऐसी की तैसी उन्हें खिलाओ भाई। हाँ, बिल्कुल सही। नहीं, वो तो हम सारे बात कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी की बात कर ली हमने, तो इसकी बात कर ली हमने, टाइम देने की बात कर ली, वो तो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। लाइफस्टाइल ही को चेंज करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज गुड, क्योंकि आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट इट मोर। हमें इसके बारे में और बात करनी चाहिए कि बच्चों को कैसे उनको डील करना चाहिए, इंशाल्लाह। ठीक भाइयों, 15 मिनट ले लिए हमने नाश्ते के। क्यों बोला? आखिर दावाना अनिल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।